Hello everyone, so we are in Bali and right now we are filming our vlog in Bali and we are going to talk about कि कैसे यहाँ की करेंसी एकदम ही गई हुई करेंसी है। मतलब 1 लाख रुपए के नोट चलते हैं यहाँ पे एसी एंड हमारे होटल का बिल, हमारे खाने का बिल भी 12 लाख रुपए का आया था, बट दैट रफली इज अराउंड 3600 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ ओनली। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि कैसे किसी भी कंट्री की इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उसको अपनी करेंसी डीवैल्यू करनी पड़ती है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सो मच डीवैल्यूड करेंसी। एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू गो शूट आवर व्लॉग इन द बीच एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कंट्रीज इकोनॉमी राइट नाउ। सो स्टे ट्यून्ड गाइस। हेलो एवरीवन, सो वी आर इन बाली। एज यू ऑलरेडी सीन कि हम यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं फाइनेंस का। अक्षत ने ऑलरेडी ये वीडियो बना रखा है जहाँ पे ही इज टॉकिंग अबाउट फाइनेंस इन अ बीच एंड वी आर आल्सो टॉकिंग ऑन अ बीच अबाउट फाइनेंस, बट वी आर इन बाली। तो सबसे पहले इधर आप करेंसी देखोगे, द करेंसी हेयर इज 1 लाख for 600 rupees. So for 10,000 Indonesian rupiah, it's 60 rupees, and for 1,000, it's 6 rupees. What is the reason कि यहाँ की करेंसी इतनी ज़्यादा गिरी हुई है? रीज़न कि यहाँ की करेंसी इतनी ज़्यादा गिरी हुई है, it's only because of inflation. And the second reason is क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में डिफिकल्टी होती है, तो there are 3 pointless zeros added to the currency. So everywhere when you go to store and everywhere you will see 40.000. So it doesn't say comma, but it does say 40,000. People will say 40,000 for anything that you need. So there are 3 pointless zeros added. So that's just to make the calculation easy. But also at the same time, the inflation is very high, guys. Here 25,000 is for a bread का पैकेट। तो अगर आपको बाहर जाना है ब्रेड का पैकेट लेने के लिए तो 25,000 इंडोनेशियन रुपए खर्चने पड़ेंगे। एंड स्टार्टिंग ही ऐसे होती है यहाँ पे, कोई भी चीज़ की, किसी भी चीज़ की शुरुआत 10,000 से नीचे की तो होती ही नहीं है। कोई भी इकोनॉमी इस चीज़ को कैसे लड़ेगी? सनसेट इज हियर एंड इट्स ऑलमोस्ट नाइट, सो आई एम ट्राइंग टू मेक इट क्विक। कोई भी इकोनॉमी अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कैसे करेगी? It will be done if more and more import-export transactions are done via their local currency. Initially, in the history, we've also seen India and Russia have done an arms deal, and the deal was totally done in Indian rupees. मतलब US dollars में नहीं हुई थी, Russian ruble में नहीं हुई थी, वो सिर्फ Indian rupees में हुई थी। इसका reason है because Indian government wants to make the currency strong. How can Indonesia make their currency strong or any other country if they can make more and more local currency deals even if they are doing foreign transactions? So that's all for the topic, and hopefully I'll also show you around what we're doing and how are things here. Okay, bye bye. बता तो आता है कब बनाया